So here, when we read this particular question, Daniel is organizing a social event. Which of the following would be benefits of him forming a committee to manage the planning process and the event itself? Okay, what can be the benefits of managing this? Question option one is it would help to overcome his limitations by bringing on board other people with different skills to him. Yes or no? Will it be a benefit? Yes. It would save time through joint efforts of everyone on the committee. Yes or no? Yes. It would help to satisfy Daniel's social needs. Yes or no? All members of the committee would have to be skilled in all aspects of managing the social event. Yes or no? Yes. कौन कौन yes बोल रहा है? What do you say, Zara? I think that's a yes, but that's more of a requirement, I feel, not a benefit. Okay, fine. So let me just share with you guys. Whenever you have a question like this, most of the times, ये याद रख लो कि कोई भी चीज flawless नहीं हो सकती है. Nothing can be flawless in this particular aspects of questions. जैसे कभी भी only everything should be included. हर कोई एक्सपर्ट है, ऐसा हो नहीं सकता है. पॉसिबिलिटी कम होती है ऐसा होने की. Now, the possibility of everyone being an expert, is it possible? First of all, you are making a committee and in on that committee everybody is an expert. वैसे तो टीम ही नहीं बनती. Okay, you should have an office boy, you should have a operator, you should have all those people in it. In a social event also, you should have people who will arrange chairs, who will welcome the guest, rather than being everybody an expert in it. So this particular option, option number 4, is out. Because that's not possible. ये थोड़ा impossibility की तरफ है. All members of the committee would have to be skilled. मतलब एक requirement आ गया ये. Have to be skilled in all aspects of managing the social event. This cannot happen. मुश्किल है ये, बहुत मुश्किल है. So option number 4 is out. 1, 2, 3 is the answer. You guys get it? You answered 1, 2, 3, right? कौन कौन आंसर कर 1, 2, 3 देखेंगे. ये तो बाद में आंसर क्रॉस करके करे वहां पे. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. अगर आप लोग इतना मतलब योर थॉट प्रोसेस शुड गो थ्रू दिस. यू शुड गो थ्रू दिस थॉट प्रोसेस बिफोर आंसरिंग इट. एक बार में ही पढ़ के गट फीलिंग के थ्रू चले गए नहीं. मेक अ सिनेरियो इन योर हेड. अब जैसे कि डैनियल इज ऑर्गेनाइजिंग अ सोशल इवेंट. व्हाट कैन बी अ सोशल इवेंट? जैसे कि गरीबों को खाना खिला रहे हैं. ठीक है, कुछ हजार बच्चों को खाना खिला रहे हैं, या फिर कुछ हजार बच्चों को कुछ एक पर्टिकुलर क्लास या एक पर्टिकुलर सेशन पे अवेयरनेस दे रहे हैं. इमेजिन दैट इन योर हेड. there's a social event happening. Which of the following would be benefits of him forming a committee to manage the planning process and the event itself? So you'll need at least 30 to 40 volunteers and managers, committee members, all that stuff. Put it in your head. What can be the benefits? Then go towards option 1. You will get more skills people. Yes. You'll have joint efforts. Good. Whatever was your social needs that you wanted to, educate those people or feed those people, you are able to do it. And when you see here the 4th point, all members should have to be skilled, should be everything the best of the best. Can I get all the best of the best people? Think about it. No, then that goes out of the option. So this scenario, the question which you read, your visuals should be so strong in your head that you should make it that it is actually happening. Then you will be able to come up with a right answer. It's highly related. Okay. Now, moving forward, different types of organization. ये थोड़ा सा same bookish knowledge है. A commercial versus a non-for-profit. Commercial is profit seeking. Not-for-profit is not profit seeking. Then there is
those commercial companies, sole traders, single person doing all the work, partnership, two or more people doing it, limited liability company. अब ये देखो, ये partnership almost they do the same work only. Okay, if I'm leaving, not reading this, who has to read this? You guys have. When do you have to read it? After the class, when you go back home, you have to read it by yourself. Limited liability companies, a company has a separate legal identity to its owners. If you remember in commerce, you guys would have read business entity concept. Organization is separate and the person who is running it is separate. Business is the different entity. Same goes with the limited liability companies. The owner's liability is limited to the amount they have invested into the company. That's it. Then goes with private company, which has a limited after their name. Public company, it has a PLC, public limited company after their name. And can you guys tell me private और public के अंदर difference क्या है? Public can issue their shares to public. Yeah. Exactly. Private can. In public, you will be having as many, shareholders. The public is the shareholders. But in private company, there is a limitation of limited liability and public is kind of same. उसके अंदर आ जा सकते हैं वो, क्योंकि limited liability companies के अंदर ही वो दोनों आ रहे हैं. If you just see here, under this only these two are there. Under limited liability company, public and private is there. Public और private के अंदर difference क्या है? Public, as Zara said it online, then you can issue shares to the public at large. Whereas in private, you cannot issue the shares to public at large. You issue it to those, that small group of people only. So if you just see this, okay, this is also kind of a growth map. जैसे कि कोई business जो शुरू होता है, वो एक sole trader की तरह शुरू होता है. Then slowly they go on towards having a partnership. And then they have a limited liability company where there is private limited. Now in private limited, you are having limited shareholders. And once that limited shareholders are there and you want to increase the number of limited shareholders, you go towards public shareholder. अब यहाँ पे, how is an organization from a private limited going public limited? उसके अंदर बहुत सारे rules regulations आते हैं, बहुत सारे compliances आते हैं. That somewhere or the other we'll be learning it in corporate and business laws. We'll be doing that. For now, it is just an explanation of what organization is. Is that clear, everyone? And then for not-profit organization, what do they include in not-for-profit organization? Government departments, agencies, schools, hospitals, charities, clubs. You guys can write it down also. क्या क्या आ जाता नॉट फॉर प्रॉफिट में? Not for profit organization, just write it roughly, write it. क्या क्या आएगा? क्योंकि see, you will get a question that which of the following is not an NFP? Which of the following is an NFP? Everyone able to follow? Huh?
क्लब्स जैसे कि देखो, अब यहाँ पे हैदराबाद में देख लो, निजाम क्लब है, ठीक है। निजाम क्लब, have you guys been there? Me too, I've not been there. बट ये क्या हो जाता, एक एक सोशल नॉर्म है, एक सोसाइटी, लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जाते हैं क्लब को, कंट्री क्लब लोकेटेड। तो ये क्लब्स का क्या होता है, एक मेंबरशिप पेमेंट आपको करना पड़ता है, जैसे कि एक 50-60 हजार पर एनम इज अ मेंबरशिप फी फॉर इट, एंड देन यू गेट द बेनिफिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लब, एक्सेस टू दैट क्लब, जैसे कि आपको कोई फंक्शंस करना है तो यू गेट इट एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, and then normal amenities of that particular club you get it at an easy manner. So that is not for profit, that is just for more social gatherings and all. तो ये चैरिटीज में है। अब जैसे कि रेफ्यूजी कैंप्स चलते हैं, वहां पे डॉक्टर्स जाते हैं, काम करते, दे डू इट बाय देयर हार्ट एज अ चैरिटी, दे डोंट चार्ज फॉर इट। हैव यू सीन दैट मूवी द स्विमर्स? नहीं देखे आप लोग? तो वो, इन दैट मूवी इट शोज सीरिया में, जब सीरिया 2014-15 में जब इमरजेंसी बड़ी प्रॉब्लम्स आए, तो वहां से लोग माइग्रेट करने के लिए यूरोप जाना चाह रहे थे। people were not accepting refugees like that, so they had to go through different routes just to flee from their country, just to survive they had to flee from their country, leave everything। तो वो लोग ऐसे नहीं है कि गरीब लोग जो है वो नहीं, गरीब अमीर सब गए वहां से, जो कुछ था सब छोड़ कर गए। तो गए वो लोग रेफ्यूजी कैंप्स में रहे फिर। अब रेफ्यूजी कैंप्स में उनको क्या पैसे देने की जरूरत थी वहां पे? आई डोंट थिंक सो, दे हैड टू, बट इट वाज अगेंस्ट देयर सोशल नॉर्म्स, राइट? आप ही सोच लो, आप खुद, आपके पास पूरे फैसिलिटीज है, आप अपनी फैसिलिटीज छोड़कर जो है जा रहे हैं, तो कोई ना कुछ इमरजेंसी होगी, जस्ट टू सर्वाइव यू वेंट देयर, and then people are supporting you, understanding your problem and supporting you. They don't have get anything in return, but they are supporting on the basis of humanity. Doctors are there supporting you on the basis of humanity, without looking at your race, your religion, your face, your nationality. Nothing is being seen, on the basis of humanity. That's types of charities which are there across the globe. So in that movie, it is shown in a really good manner. It's a real story out there. If you guys want to, ये टीवी पे Netflix, Amazon सब है। किसी दिन अगर आप लोग अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाए, तो we will utilize that subscription also. Okay. Now, moving forward, objective of NFPs is to exist to treat patients. Council may see their mission for as caring for their communities. ज्यादातर इंसानियत के बेस पे, on the basis of humanity, things are done on it. Okay, on the basis of humanity, कितनी अच्छी चीज होती है ना humanity, on the basis of humanity। लेकिन कभी कभी ये humanity थोड़ी टॉक्सिक हो जाती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, everybody is human, everybody has a right to live, all that stuff, ये बेसिस पे लोग बात करते हैं। everybody has a chance to be heard of। थोड़ा ऑफ टॉपिक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल those people who are charged with criminal cases, they look at them also as humans, उनके लिए भी ह्यूमैनिटी आ जाती है। अब सपोज कोई सही में गुनहगार है, कोई सही में जो है सोते मर्डर करके बाहर घूम रहा है, उसको भी एज ह्यूमन अगर आप कंसिडर करेंगे, तो फिर ह्यूमैनिटी ही मर रही है वहां पे, क्योंकि वो ह्यूमंस को ही मार रहा है। तो ऑन अ डिफरेंट बेसिस ह्यूमैनिटी थोड़ा उतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा जस्टिस भी आना चाहिए बीच में। फाइन, नाउ let's just go further. Public versus private sector. Now, a public sector organization is that which is governed by the government, and a public sector in here, what it is, police, military, this is for the national interest of people। क्या क्या है?
पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर फॉर पुअर। अब आप सोचेंगे कि अरे ये तो है नहीं यहाँ पे, नहीं यहाँ पे भी है ना, इंडिया में भी है ना। हेल्थ केयर फॉर पुअर इज टेकन केयर। हाँ, स्कीम्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट मेडिसिन है। अब वो कैसे वो लोग मैनेज हो रहे हैं, आई एम नॉट आस्किंग दैट, आई एम नॉट टॉक अबाउट इट, बट एफर्ट्स तो है। ठीक है, what all comes under public sector organization, all these type of stuffs. Then further going towards, I hope you guys are making short notes faster in it. Private sector में क्या है? Business, charities, clubs, all these are coming under private. हालांकि ये NFPs में भी आते हैं, but they are just segregating based on private and public. So I hope you guys are getting clarity here, क्योंकि यहाँ पे what is this answer to this? Many schools run fundraising events such as फीटस मतलब के छोटे छोटे पैसे, $10, ₹10, ₹20 ऐसा कुछ कलेक्ट करते, where their intention is to make profit. This makes them profit seeking. लिखो आंसर, लिखो आंसर, सोचो सोचो सोचो। विजुअलाइज करो। स्कूल में आप हो, वो स्कूल में स्कूल का मैनेजमेंट आके बोल रहा है कि हम कुछ फंड रेजिंग कर रहे हैं, आप भी इसमें कुछ पैसे दो, एक ₹10-20। Does it make it profit seeking? आप सोचो आप। अच्छा, ये याद रख लो कि स्कूल चाहे पब्लिक हो, प्राइवेट हो, कुछ भी हो, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ही है। अब वो बात अलग है कि उनको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो नॉट फॉर प्रॉफिट ही होती है। अब जैसे कि एक कोई एडमिशन हो रहा है, कोई एडमिशन को वो एडमिशन नहीं बोलते, वो लोग बोलते हैं एक मेंबर ज्वाइन हुआ है। वेयर जैसे कि एक एप्पल आईफोन बिके, तो इफ देयर इज अ सेल हैपनिंग, दिस इज इट्स अ सेल हैपनिंग, वी सोल्ड वन प्रोडक्ट। But if suppose someone is getting admitted here in the school, we say that there's a member which is joined. अब वो बात अलग है कि उससे फीस आप लेते रहेंगे, but it's a member which has joined. So there are two different things. After all, customer के जेब से पैसे जा रहा है, लेकिन उसको अलग दो तरीकेकार बता रहे हैं। एक हो रहा है फीस, एक हो रही है कस्टमर। Think about it. So the answer here, I'm not going to say it to you guys. You have time. सोचो, ट्रू और फॉल्स में सोचो। किसी के पास कोई पक्का आंसर है क्या? किसके पास है बताओ? पक्का? अनस या आंसर? ओके, अनस इज सेइंग इट्स फॉल्स। दूसरे फॉल्स, 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 फॉल्स। 3 फॉल्स हो गए, और रेहान एंड रिमशा इज रिमेनिंग। फॉल्स, क्यों फॉल्स? सब फॉल्स बोल रहे, इसलिए फॉल्स, या फिर यू थिंक दैट इट्स फॉल्स? ओके, क्यों दिख रहा? क्यों? क्योंकि मैं अभी तक पूछ रहा हूँ इसलिए है। छोड़ो, यू हैव स्टिल टाइम फॉर इट। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, उसके अंदर क्या आ जाते हैं? जैसे कि एनजीओज। These people, work for the public, but they are not government. जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गए, दे वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। ये एनजीओज है, एनजीओज के नाम है ये। The same things which we just talked about, ये वो एनजीओज हैं जो आपके ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे काम करते हैं। They don't work on some subscriptions or all that stuff. They work based on humanity.
के कोऑपरेटिव्स वो होते हैं जो यू वुड हैव सीन, जैसे कि किसी को कुछ घर बनाना है एंड सपोज एक सोसाइटी बन रही है कि ये सोसाइटी में वो लोग को एक घर मिलेंगे जो इस सोसाइटी के मेंबर है, तो आपको सोसाइटी का एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट देना पड़ेगा। और फिर अब ये कोऑपरेटिव जैसे ज्यादातर कहाँ आते हैं मालूम, जैसे कि सपोज it is mostly based on sometimes nationalities, sometimes religion, sometimes their caste, sometimes so whatever it is। अब जैसे कि हम यहाँ पर एक मुस्लिम सोसाइटी बना रहे हैं, या हम यहाँ पर एक हिंदू सोसाइटी बना रहे हैं where all these people are only going to live, या फिर हम यहाँ पे एक ऐसी सोसाइटी बना रहे हैं जो सिर्फ ये कंपनी में काम करने वाले लोग रहेंगे, या फिर सपोज इन यूएस वी आर मेकिंग अ इंडियन कम्युनिटी, इंडियन सोसाइटी। ठीक है, इतनी जगह पे हम इंडियन सोसाइटी बना रहे हैं, तो ऑल इंडियंस कैन ओनली बी पार्ट ऑफ इट। सो इट डिपेंड्स नाउ, you have to pay a subscription fee there, so to be a part of that particular cooperative, and after that you get it at a discounted price. In fact, यहाँ पे if you've been in Dubai, or you'll find cooperative society hypermarket, तो वहां पे क्या होता है, every UAE national get all the groceries at a discounted price। hypermarket से जो भी खरीदते हैं they get it at a discounted price when compared to other expats, other people staying there। So that's a corporate society, cooperative society। ठीक है, everyone there with me? What can be these answers? In fact, I guess we are done with chapter 1. Yeah. Sectors in which organizations operate: agriculture, mining, finance, retailers, service, transportation. That's fine. But we are done. Summary is something which we just completed. They are just summarizing it. I want you guys to answer this. Just write down. थर्ड का आंसर करेक्ट है नहीं है, मैंने बोला अभी तक। ट्रू फॉल्स आई डिड नॉट से इट। इवन फॉर फोर्थ आई एम नॉट गोइंग टू से, फिफ्थ ऑल्सो आई एम नॉट गोइंग टू से। राइट डाउन योर आंसर। Done with this, fourth one is done. Then fifth one. पब्लिक सेक्टर पूछ रहा है। पब्लिक सेक्टर, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दोनों में बहुत फर्क है। Public limited company, and public sector, they are two different things, all in all different things। Public limited में there is no limited people in there। Public limited, it's a public company। लेकिन पब्लिक लिमिटेड का मतलब क्या होता है कि इसमें पब्लिक का लिमिट नहीं हो रहा है। वॉट एवर अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग, उतनी ही आपकी लायबिलिटी है, तब वो लिमिटेड बन रहा है। गेटिंग माई पॉइंट?
Limited here is not literally limiting the public. Limited here is limiting your liability. Okay, and your liability towards the company is only the shares which you purchase. That's it. अगर लॉस हुआ तो उतना ही लॉस होगा, कोई आपके घर पे नहीं आ जाएगा. Okay. Everyone done with this? मेरे को तो आंसर्स मालूम है. अब sectors in which organizations operate, what is there? Agriculture के अंदर है, mining के अंदर है, finance, retailers, service, transportation. So these all are industries where organizations operate. और ये तो बस एक छोटे थोड़े से industries है. There are many more where organizations operate. Education and all that stuff will come under this. All sectors it covers. Last one be able. This is not an exhaustive list, but it should be giving you some idea of the list of people where organizations operate. And we are done with chapter 1. Here is just the summary of what we just did. ये देख लो यहाँ पे आप लोग. Organization का nature क्या है? Social arrangements, collective goals, control performance. Types of organization में profit seeking versus not for profit, private versus public sector, cooperative, NGOs. And differences, ownership, objectives, activities, funding, size, liability is the difference between all of them. यहाँ पे वो क्वेश्चंस के आंसर्स है शायद, लेकिन फर्दर क्वेश्चंस भी है. क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10. हाँ, वो 10 बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको करना है. दिस इज योर होमवर्क फॉर यू. आज today we completed one chapter. Okay, now it's your responsibility to go through that chapter. Tomorrow we'll try to complete, we can only try to complete the second chapter, but it won't be possible because वो बहुत ज़्यादा लंबा chapter है. I guess it will take another 2 to 3 days क्योंकि ये second chapter इतना vast है, बहुत कुछ cover हो जाता है उसके अंदर. Everything gets covered in it. वो second chapter के relevance में आप पूरा BT कर सकते हैं, इतना ज़्यादा vast है वो. But for now, we are going to give it a pause for business and technology and jump towards management accounting with a 5-minute break. Any doubts in here in this session? No doubts? If there's no doubts, it's well and good. But once you go back home, you read, you go through the test your understandings once again, then there will be doubts and questions, and most welcome at that time. So I'll be ending this session and then